In this lecture, we are going to discuss enzymes used in genetic engineering. Enzymes are the most important tools of genetic engineering. Enzymes play a very important role in genetic engineering in the isolation, in the cutting, and the ligation of our gene of interest with our vector. In the previous lecture, that was an overview of genetic engineering. We extracted the tools of genetic engineering, the gene of interest, enzymes, vector, and expression system. These are our tools. Gene of interest, that is the gene which is to be cloned or expressed. It depends on our product or our need or our requirement. Enzymes are mainly used in the lysing or in the lysis of the host cell, in the extraction of the DNA, in the extraction of gene of interest, in the cutting of the gene of interest and the vector, and the joining of the vector with the gene of interest, formation of the recombinant DNA recombinant vector. These are the different uses of the enzymes. In this lecture, we focus on the enzymes that are used in genetic engineering. Vector, that is the carrier that carry our gene of interest into the host cell, that express our gene of interest in the host. Expression system, that carries our vector having the gene of interest and express, increases copy number and produce the product. Gene of interest will be discussed in the technique section. Here we will take an overview of the gene of interest, what is gene of interest and how we can obtain gene of interest. There are different methods that can be used to extract the gene of interest. Gene that is to be cloned or expressed is called gene of interest. वो जीन जिसको हमने एक्सप्रेस करना है, जिसको हमने क्लोन करना है, जिसको हमने नंबर को इंक्रीज करना है, जिसका हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा. There are different methods to obtain gene of interest. We can obtain gene of interest by using chromosomal DNA, by taking the gene of interest by from the gene library. Messenger RNA can be used as a gene of interest. How this can be used as a gene of interest? This messenger RNA is converted into the cDNA, complementary DNA, by using reverse transcriptase, and that can be used as a gene of interest. आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस, द जीन हैविंग द स्मॉल साइज, वो जीन जिसका साइज कम होगा उसको हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर सकते हैं डीएनए सिंथेसिस मशीनरी में, डीएनए सिंथेसिस मशीन में. आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस कैन आल्सो बी a technique that can be used to obtain the gene of interest. These all techniques will be discussed in detail in the technique section. Here we will focus on the enzymes used in genetic engineering. Enzymes are very important in the recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is totally based on the different types of enzymes. Some important enzymes are lysing enzymes. Lysing enzymes are also called the degrading enzymes. These enzymes lyse the cell and mainly used to extract the DNA, or these enzymes mainly used to transform the vector having the gene of interest. या तो हम इससे इन लाइसिस एंजाइम्स को जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लाइसिस एंजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइसिस एंजाइम में सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स that are used in the plant cells, in the fungal cells, in the bacterial cell, and in animal cell we use the cell membrane degrading enzymes. There are different types of enzymes used in different hosts. For example, in plants, we can use the cellulase, pectinase, proteases, and lipases. While in animal cells, we can use the proteases and lipases. In fungal cell, for degradation, we can use chitinase. As in fungal cell wall, chitin is the most important component. Proteases for degradation of proteins, and lipases for lipids. For bacterial degradation and lysing, we can use the lysozyme enzyme. After the degradation of the cell, at the animal cell degradation, cell membrane of the animal cell degradation, the cellular contents will leaked out. We can obtain our desired product, whatever we want. If we want to take the DNA, that can be used after the lysis of the cell. In these days, we can use different techniques, different kits used for the isolation of the DNA that will be discussed in later.
The most commonly used enzymes in recombinant technology, it is a summary of the enzymes used in the recombinant technology. Alkaline phosphatase, it is used for the removal of the phosphate group from 5' end of double-stranded or single-stranded DNA RNA. Bal31 nuclease, for the progressive shortening of DNA, we can shorten the DNA by using Bal31 nuclease. DNA ligase, for the joining of the DNA molecules by forming phosphodiester linkage between DNA fragments. DNA polymerase I synthesizes, it has a polymerase activity and the exonuclease activity as well. Synthesize the DNA complementary to a DNA template. DNase I produce single-stranded nicks in the DNA. Nicks mainly refers to the when a phosphodiester bond is missing, that is called the nick. If the whole nucleotide is missing, that is called the gap. इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. Exonuclease 3 enzymes remove the nucleotide from 3' end. Lambda exonuclease remove the nucleotide from 5' end. Polynucleotide kinase transfer phosphate from ATP to 5' OH end of DNA and RNA. Restriction enzymes used to cut the double-stranded DNA at specific recognition sites. Reverse transcriptase is used for the synthesis of the cDNA from RNA. RNase A, it is used to cleave and digest the RNA, not the DNA. It is used for the these are ribonucleases, RNase A and RNase H. RNase H is used to cleave and digest the RNA strand of DNA RNA heteroduplex. जब हम मैसेंजर RNA से cDNA बनाएंगे, उसमें एक डुप्लेक्स बनेगा, उसमें जो RNA को जो डिग्रेड करेगा वो RNase H होगा. ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. Tag polymerase, tag DNA polymerase used in the polymerase chain reaction. It is the heat stable enzyme. S1 nuclease degrades single-stranded DNA and RNA. Terminal transferase adds nucleotide to 3' end of the DNA RNA that are useful in the holopolymer telling. This is a summary of the enzymes used in the genetic engineering. We will discuss detail of each and every enzymes in further slides. To make it easy for our convenience, we can classify the enzymes into different categories. These enzymes are used for cutting, for modifying, and for joining. Enzymes can be classified into three categories: restriction endonucleases, DNA modifying enzymes, and DNA ligase. Restriction endonucleases, these are the enzymes used to cut the DNA at specific site, at specific recognition sequences. That's why these are called the restriction endonucleases. Restriction endonucleases एक specific जगह से cut करते हैं. That's why these are called the restriction endonucleases. And these are used for generating DNA fragments. These are used for generating DNA fragments and restriction mapping. हम जो restriction endonuclease है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में, अदर लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे restriction endonuclease को. इस लेक्चर में हम DNA modifying enzymes और DNA ligase पे फोकस करेंगे. DNA modifying enzymes are the nucleases. Nucleases की further दो types हैं, endonucleases and exonucleases. What are the endonucleases? Endonucleases are the nucleases that cut the DNA within the with internal without within the DNA. जो न्यूक्लियोटाइड को जब इंटरनली कट करेगा उसको हम बोलेंगे एंडोन्यूक्लियासेस. और वो एंजाइम जो डीएनए को टर्मिनल पोर्शन से कट करेगा, आइदर वो 5' एंड हो या 3', दैट आर कॉल्ड द एक्सोन्यूक्लियासेस. एंडोन्यूक्लियासेस की एग्जांपल्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, DNase I है, S1 न्यूक्लियस है. एक्सोन्यूक्लियास की एग्जांपल्स क्या है? Bal31 है, उसके अलावा एक्सो न्यूक्लियस 3 है और लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस हैं. Bal31 एक्सोन्यूक्लियस 3 एंड लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस, these are the exonucleases, examples of exonucleases. So we have discussed endonuclease internally cut करेगा और exonuclease terminal points पे cut करेंगे. DNA polymerase enzymes, these are mainly used for the polymerization. These are used for the addition of the nucleotides at the 3' end. उनको हम polymerases बोलते हैं. There are three types of polymerase used in the E. coli, polymerase 1, 2 and 3. इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. DNA polymerase, klenow fragments डिस्कस करेंगे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज polymerase की examples हैं. Enzymes that act on the terminal portions that are called the alkaline phosphatase, polynucleotide kinase and terminal transferase. These are the DNA modifying enzymes. The DNA ligase enzymes are the enzymes that joins the DNA molecules, that that form the phosphodiester linkage, phosphodiester bond between the two nucleotide having the nick. क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर भी डिस्कस करेंगे. जनरेट रिकॉम्बिनेंट DNA, तो जब हम अपने डिजायर जीन को
जो वेक्टर के साथ कंबाइन करेंगे उसमें जो डीएनए जो एंजाइम्स उसको हम बोलेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम्स. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स यूज्ड इन द recombinant technology or genetic engineering. We can classify into restriction nucleases, DNA modifying enzymes, and like DNA ligase. Starting with the DNA modifying enzyme nucleases. Nucleases are the enzymes that break the phosphodiester bond within the DNA or within of the DNA. Nucleases that break the phosphodiester bond that holds the nucleotide together of the DNA that are called the nucleases. Nucleases nucleic acid को डिग्रेड कर रहा है तो phosphodiester bond को जब ब्रेक करेगा उसको हम बोलेंगे उनको हम बोलेंगे nuclease enzyme. There are two types of nucleases, endunucleases and the exonucleases. Endonucleases are the enzymes that act on internal phosphodiester bond. जो internal nucleotides पे जब अटैक करेगा enzyme उनको हम बोलेंगे endonucleases. Endonucleases में restriction nucleases most important enzymes हैं that cut the DNA at specific site, that recognize a specific site and cut their specific site that are called the restriction nucleases. ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक सेपरेट लेक्चर में because these are the most important enzymes. इनका कटन पैटर्न इनकी टाइप्स और इनका जो पैटर्न है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. S1 nuclease, S1 endonuclease, it degrades the single stranded DNA or single stranded protrusion of double stranded DNA with cohesive end. As a result of action of S1 nuclease, cohesive ends are converted into the blunt end. इसमें या तो ये सिंगल स्टैंड को कट करेगा या डबल स्टैंडर्ड में जो प्रोट्रूडेड होता है, प्रोट्रूडेड एंड वो होता है जो एक्सटेंडेड होता है, जो बाहर निकला उसको हम प्रोट्रूडेड एंड बोलते हैं. Therefore, S1 nuclease is used to remove the incompatible ends so that overlapping ends may be developed for annealing of two fragments. जो incompatible ends होते हैं उनको remove करेगा. For example, इस एग्जांपल में इन सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस है इसमें ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं T T A A, these are the protruded end. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये प्रोट्रूडेड एंड है. S1 न्यूक्लियस क्या करेगा? S1 न्यूक्लियस इन न्यूक्लियोटाइड्स को डिग्रेड कर देगा, रिमूव कर देगा. सो दिस इज द स्टिकी एंड. ये स्टिकी एंड. अब स्टिकी एंड क्या होता है? स्टिकी एंड वो एंड होते हैं जिसमें एक जो न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए को वन पोर्शन एक्सटेंडेड होता है, प्रोट्रूड, उसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं. तो ये स्टिकी एंड किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लंट एंड में. दोनों साइड्स बराबर हैं. दोनों साइड्स क्या है? बराबर हैं. दीज आर द ब्लंट. सो इन S1 न्यूक्लियस प्रोड्यूस convert the sticky end cohesive ends into the blunt ends. इसकी examples अगर हम in this diagram we can see S1 nuclease is targeted on this portion. इस portion पे कट करेगा, इसको डिग्रेड करेगा और जो डीएनए उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा. So S1 nuclease डिग्रेड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आर द प्रोट्रूडेड एंड ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए और जो स्टिकी एंड्स हैं उनको ब्लंट एंड्स में कन्वर्ट करता है S1 न्यूक्लियस. Deoxyribonuclease 1, this is also called DNase I. DNase I cut either single stranded or double stranded DNA at essential random sites. मुख्तलिफ साइट्स पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड एंड को मुख्तलिफ साइट्स पे कट करेगा. It can be cut here, it can be cut here, it can be cut here. These are different random sites for the cutting of the DNA. So when DNase cut the DNA randomly at different position at different sites, it will produce different fragments. जब DNase I जब DNA पे act करेगा different sites पे randomly, so we can produce different ends. तो cuts DNA into random pieces, different piece बनेंगे piece 1, piece 2 and piece 3. So random cleavage, every strand is different strands produce होंगे. Exonucleases. These enzymes degrade DNA from the terminal ends, either from the 3' end or the 5' end. That enzymes are called the exonucleases enzymes. Types. Exonuclease 3. Exonuclease 3 enzymes remove nucleotide from 3' OH end of the double-stranded DNA fragment. This enzyme is used for the 3' end modification of DNA fragment. जब हम 3' end से देखें, ये 3' end है और ये 5' एंड, 3' 5' एंड. हमने जब 3' एंड से डीएनए या न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना शुरू किया, सो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एक्सोन्यूक्लियस 3. यहां से भी 3' एंड से कट करेगा और यहां से भी 3' एंड से कट करेगा. तो एक्सोन्यूक्लियस 3 टर्मिनल पोर्शन से कट करता है, लेकिन कहां से? 3' एंड से. Lambda exonuclease, also the exonuclease, it remove or degrade or exonuclease the nucleotide from 5'.
form 5' end of the double-stranded DNA. Consequently, an improved substrate for the terminal transferase is formed. This enzyme is used for the 5' end modification. ये 5' end को modify करेगा. Here 3' end और ये 5' end है, ये 3' और ये 5'. तो ये 5' जब end क्या होगा, ये degrade कर रहा है enzyme. Lambda exonuclease targets 5' phosphorylated end. तो इसको जब degrade करेगा तो क्या बच जाएगा, single stranded 3' to 5' end. ओके तो लैम्डा जो एक्सोन्यूक्लियस है ये 5' एंड को टारगेट करता है और एक्सोन्यूक्लियस 3 किसको करता है, एक्सोन्यूक्लियस 3 टारगेट करता है 3' एंड को, लेकिन टर्मिनल साइड से. Bal31 nuclease. This enzyme is very specific single-stranded endo deoxyribonuclease. It degrades simultaneously both 3' and 5' strands of DNA molecule. ये दोनों ends को कट करेगा. Exonuclease है, दोनों 3' और 5' end को कट करेगा. That is called the Bal31 nuclease. Consequently, shortened DNA molecules are formed. These fragments possess blunt ends at both terminal. हमने जो summary में discuss किया था, Bal31 is used to shorten the DNA molecules. 5' to 3', 3' to 5'. Bal31 exonuclease ने दोनों तरफ से कट किया और उसको क्या बना दिया, 4 nucleotide very short. This is the long sequence and this is the short sequence. This is the summary of the whole enzymes that we have discussed. Bal31 दोनों तरफ से कट कर रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी. एक्सोन्यूक्लियस 3' एंड से कट कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस 3' एंड से कट कर रहा है. डीएनएस डिफरेंट साइड से रैंडमली कट कर रहा है और डिफरेंट पीसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं. और S1 जो है वो S1 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर रहा है. दिस इज द cutting pattern of the various or mode of action of various nucleases. Nuclease Bal31 is a complex enzyme. Its primary activity is fasting 3' exonuclease, which is coupled with the slow-acting endunucleases. When Bal31 is present in the high concentration, these activities effectively shorten DNA molecules from the both termini. Exonuclease 3 is a 3' exonuclease that generates molecules with a protruding 5' end. DNase I cuts either single-stranded or double-stranded DNA at random sites. Nuclease S1 is specific for single-stranded DNA or RNA. Ribonucleases are the enzymes that are used to degrade the RNase. In addition to the DNA-specific nucleases, there are ribonucleases that are also called RNases, which act on RNA. These may be required for many of the stages in the preparation of the and analysis of recombinants and are usually used to get rid of unwanted RNA in the preparation. जब RNA को हम रिमूव करना चाहेंगे उसके लिए हम RNase का इस्तेमाल करते हैं. Contamination with RNase can be problem in preparing recombinant DNA, particularly where cDNA is prepared. जब हम cDNA बनाएंगे तो mainly for cDNA synthesis we use the messenger RNA. तो उसके लिए हमें RNase से, RNA की contamination से अपने आप को avoid करना होगा. उसके लिए हमने precautionary measures इस्तेमाल करने होंगे. So it can it can make a problem while we are using the cDNA by using the RNA messenger. Ribonucleases can be a problem when working with purified preparation of RNA, and care must be taken to remove or inactivate RNase activity. RNase A, it is a nuclease that digests RNA. ये RNA को digest करेगा RNase A. जबकि RNase H, it also a nuclease which target or will digest the RNA or RNA DNA hybrid and heterodiplex. जब हमने मैसेंजर RNA से DNA बनाया, मैसेंजर RNA से जब हमने DNA बनाया cDNA, तो उसमें जो कम्प्लीमेंट्री DNA पार्ट है वो तो बच जाएगा. इससे हमने क्या बनाना है, कम्प्लीमेंट्री DNA बनाएंगे, उसी पोर्शन को इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जो मैसेंजर RNA इस्तेमाल हमने किया इसको डिग्रेड करेगा RNase H. So मैसेंजर RNA is degraded by RNA H. It is a difference between the exonuclease and endonuclease. Endonuclease cut the DNA within the fragment, while the exonuclease at the end at the terminal. Cleavage nucleic acid at the middle of the nucleic acid, cleave nucleic acid at the end. Restriction endonucleases undergo a lag period before the activity. It has a lag period. Lag period is gap period. Does not have a lag period before the activity. Result in oligonucleotide. Different oligonucleotide बनते हैं इसमें, fragments बनते हैं. Result in the single nucleotide or nucleosides. May or endonucleases may form either blunt end or sticky ends. इसमें blunt end बन सकते हैं और sticky end भी बन सकते हैं, जबकि exonuclease में only sticky ends form होते हैं.
Endonucleases block the entry of pathogens. It is mainly used, it is actually the defense system of the host cells against the bacteriophages. While exonucleases have no specific significant role in the blocking or entry, the entry of the pathogens. Examples include the DNases, S1 nuclease, restriction enzymes, BAMH1, HEND3, EcoR1. Examples of the exonuclease are the snake venom 3' to 5' exonuclease domain of the DNA polymerase 3, exonuclease 3, lambda, and ball 31. We have discussed exonucleases. It's a summary of the enzymes exonuclease, endunuclease, and restriction endonucleases. Exonuclease cut the DNA at the terminal portion. Terminal site जब cut करेगा, that is called the exonuclease. Endonuclease cut the DNA at the middle, while restriction endonuclease cut the DNA at specific site. At specific site, a specific recognition sequence. That's why these are called restricted endonucleases. जब restrict होगा, जब cleavage pattern specific होगा, that are called the restriction endonuclease. जबकि जो endonuclease है वो internally cut करते हैं, लेकिन उनकी जो recognition sites है वो specific नहीं होती. Restriction endonucleases cut the DNA at specific site. Polymerases. Polymerases are the enzymes that synthesize copies of nucleic acid molecule and are used in many genetic engineering procedures. हम DNA molecule की copies बनाएंगे, DNA molecule की copies बनाने के लिए हमने polymerases का इस्तेमाल करना है. Polymerases की different types हैं, DNA polymerases हैं, RNA polymerases हैं और RNA dependent DNA polymerases हैं. DNA dependent DNA polymerase that copies DNA into DNA. जब DNA से DNA produce होगा, उसके लिए DNA polymerase इस्तेमाल करना है. That is called the replication of the DNA. RNA dependent DNA polymerase. RNA dependent DNA polymerase that is copies RNA into DNA. RNA dependent DNA polymerase copies RNA into DNA that is used for the synthesis of cDNA by using messenger RNA. This is also called reverse transcriptase. RNA dependent DNA polymerase reverse transcriptase that is used for the formation of the DNA by using RNA. DNA dependent RNA polymerase that is called the RNA polymerase transcribes DNA into RNA, that is the transcription. These enzymes synthesize nucleic acids by joining together nucleotides whose bases are complementary to the template strand bases. Though mainly polymerases use the template strand for its synthesis. The synthesis proceeds in 5' to 3' direction. वो DNA polymerase हो, RNA polymerase हो, synthesis always 5' to 3' direction हो. As each subsequent nucleotide addition requires a free 3' OH group for the formation of phosphodiester bond. 3' OH N group must be free for the formation of phosphodiester bond. So these enzymes work or proceeds in 5' to 3' direction. This requirement also means that a short double-stranded region with the exposed 3' OH and primer is necessary for synthesis to begin. The enzyme DNA polymerase 1. There are different types of DNA polymerases. DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and 3. DNA polymerase 1 इसमें इसकी जो बिल्ड होती है इसमें both polymerization एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जबकि पोलीमरेज जो 3 है उसमें पोलीमराइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, लेकिन उसमें 3' to 5' पोलीमराइज एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. The enzyme DNA polymerase 1 is a template-dependent DNA polymerase catalyzes 5' to 3' synthesis of DNA, mean polymerization in 5' to 3' direction. And the most important character of polymerase 1 is this enzyme exhibit 5' to 3' and 3' to 5' exonuclease activity. Both 3' to 5' भी exonuclease करता है और 5' to 3' भी exonuclease करता है. Both direction 5 to 3 and 3 to 5. When DNA polymerase 1 is the holo enzyme, it has an ability both exonucleases 3' to 5' and 5' to 3'. Klenow fragment. What is the Klenow fragment? Klenow fragment को डिस्कस करने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज 1 होलो एंजाइम को समझना पड़ेगा. डीएनए पॉलीमरेज 1 होलो एंजाइम में 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं. पॉलीमरेज डोमेन वो डोमेन जो पॉलीमराइजेशन करती है, जो सिंथेसिस करती है 5' to 3'. नंबर 1. नंबर 2, द सेगमेंट दैट इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. वो दूसरा क्या करते हैं 3' to 5' exonuclease activity करते हैं. The degradation of the nucleotide from
3 prime to 5 prime. थर्ड सेगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जब ये एंजाइम कंप्लीट होगा, जब इसमें 3 कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, दिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1 होलो एंजाइम। It is responsible for the polymerization for 3 prime to 5 prime exonuclease and 5 prime to 3 prime exonuclease. It is sensitive for proteolysis or proteases. प्रोटियाज पे इजीली अटैक कर सकते हैं और ये अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रोटियोलाइसिस बाय यूजिंग सबटेलिसिन। सबटेलिसिन को इस्तेमाल करते हुए जब हमने इसको डिग्रेड किया तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंपोनेंट है, दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंपोनेंट इज रिमूव्ड। जब हमने होलो एंजाइम से 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंपोनेंट रिमूव किया, द रिमेनिंग पार्ट और द रिमेनिंग लार्ज फ्रेगमेंट इज कॉल्ड क्लेनो फ्रेगमेंट। रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड क्लेनो फ्रेगमेंट। कैसे? सबटेलिसिन ने जब डिग्रेड किया 5 प्राइम टू 3 प्राइम को रिमूव कर दिया, अलग हो गया। अब क्लेनो फ्रेगमेंट के पास क्या एबिलिटी है? क्लेनो फ्रेगमेंट हैव दिस इन पोर्शन, दिस पार्ट दैट हैव एबिलिटी टू पॉलीमराइज and that have ability to exonuclease from 3 prime to 5 prime but not 5 prime to 3 prime. So क्लेनो फ्रेगमेंट वो फ्रेगमेंट है डीएनए पॉलीमरेज 1 का जिसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मौजूद नहीं है। दैट इज कॉल्ड द क्लेनो फ्रेगमेंट। ओके, the 5 prime to 3 prime exonuclease function of DNA polymerase can be removed. हम इसको remove किया by using subtelesin. Cleavage can be removed by cleaving the enzymes by using subtelesin to produce the klenow fragment. This retains the polymerase and 3 prime to 5 prime exonuclease activity but lack the 5 prime to 3 prime exonuclease activity. इसके पास polymerase activity भी है, polymerization activity भी है, लेकिन और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मौजूद नहीं है। द क्लेनो फ्रेगमेंट इज यूज्ड वेयर अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल नीड्स टू बी कॉपीड बिकॉज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन इज मिसिंग। द एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए। नॉन टेम्पलेट को ये सिंथेसाइज नहीं कर सकता। Reverse transcriptase, that enzyme that is used, that is also called the RNA dependent DNA polymerase and therefore produce a DNA strand from a messenger RNA, from an RNA. इसको बोलते हैं RNA dependent DNA polymerase. It has no stated exonuclease activity. The enzyme is used mainly for copying messenger RNA molecule in the preparation of cDNA, complementary DNA or copy DNA for cloning. जब cDNA को हम RNA से बनाएंगे उसके लिए हम एंजाइम इस्तेमाल करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हैव अ लुक एट दिस। डीएनए से जब डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, द एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू फॉर्म अ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए। द प्रोसेस कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, the enzyme is called the enzyme uses the RNA polymerase. The process is called transcription. DNA to RNA process is transcription. Enzyme is RNA polymerase. When this RNA is converted again into the DNA, the process is called reverse transcription and the enzyme is called reverse transcriptase. RNA को इस्तेमाल करते हुए DNA को बनाया, RNA को इस्तेमाल करते हुए DNA बनाया, RNA dependent DNA polymerase, that is called reverse transcriptase and the process is called reverse transcription. Reverse of the transcription, transcription में क्या बना? RNA, और reverse transcription में क्या बन रहा है? DNA, that is called the cDNA. Enzymes that modify the ends of the DNA molecules, the enzymes that are used to for the modification of the DNA, the terminal points are the end of the DNA that are called the alkaline phosphatase, polynucleotide kinase, and terminal transferase. These enzymes act on the termini of the DNA molecule and provide important functions that are used in a variety of ways. Alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase used to remove the phosphate group from 5 prime end of the restricted plasmid DNA. Plasmid treated with the restriction enzyme that is called a restricted plasmid, that leaving a 5 prime OH group. जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को कट करते हैं तो प्लाज्मिड से कट करने के बाद जो प्लाज्मिड हमारे पास आता है उसको हम उसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। जब इसको हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होंगे 5 प्राइम एंड पे। अब इसमें ये एबिलिटी, इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि ये फास्फेट ग्रुप जब मौजूद होंगे ये आपस में रीसर्कुलाइज ना हो जाए। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी रिमूव दिस फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5 प्राइम एंड।
इस 5 प्राइम एंड से फास्फेट को रिमूव करना है. फॉर द रिमूविंग ऑफ दिस फास्फेट फ्रॉम द 5 प्राइम एंड दिस फॉर दिस पर्पस वी यूज द एंजाइम दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन फास्फेटेस. द एंजाइम इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड लाइगेशन. ये जो हमने कट किया ये दोबारा आपस में लाइगेट ना हो जाए, इसको रिमूव करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने अल्कलाइन फास्फेटेस का इस्तेमाल किया. दैट इज यूज्ड टू ओवरकम रिसर्कुलराइजेशन. हाइड्रोलिसिस ऑफ फास्फेट ईस्टर. ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप मौजूद है, तो इसमें भी फास्फेट ग्रुप मौजूद है, तो जब फास्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे तो इसमें सर्कुलराइजेशन के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे. So when we remove the phosphate group, we use alkaline phosphatase. Or we always remove the phosphate group from our vector. Restricted vector से हम रिमूव करेंगे. हमारे जो डिजायर जीन है उससे हमने फास्फेट ग्रुप रिमूव नहीं करना. हमने रिमूव कहां से करना है? अल्कलाइन फास्फेटेस को इस्तेमाल कैसे करना है? रिस्ट्रिक्टेड प्लाज्मिड पे. प्लाज्मिड से हमने जो 5 प्राइम एंड पे फास्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करेंगे बाय यूजिंग अल्कलाइन फास्फेटेस. फॉरेन डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट किया, प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो इसमें भी ओपन एंड प्रोड्यूस हो गए. तो अल्कलाइन फास्फेटेस ने क्या किया? इससे 5 प्राइम फास्फेट को रिमूव कर दिया. लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज विल जॉइन अवर दिस डिजायर जीन इन द फ्रेगमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो निक जहां पे प्रोड्यूस होता है, निक मैं बता चुका हूं पहले, जब दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग होगा. ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है. ये दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है, दिस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड व्हेन मिसिंग, दिस इज कॉल्ड द निक. जब पूरा न्यूक्लियोटाइड मिस है, पूरा न्यूक्लियोटाइड मिस है, दैट इज कॉल्ड द गैप. दैट इज कॉल्ड द गैप. सो दिस निक दैट इज प्रोड्यूस हियर, दिस विल फिल इन द इन विवो विद इन द होस्ट. ये होस्ट सेल में ये दोबारा फिल हो जाएगी बाय यूजिंग द होस्ट एंजाइम्स. So alkaline phosphatase is used for the removing of the phosphate group from the 5 prime end of the vector. Vector से restricted plasmid से हमने 5 prime end से phosphate को remove करना है by using alkaline phosphatase. Polynucleotide kinase. Polynucleotide kinase इसका जो फंक्शन है अपोजिट टू द फास्फेटेज है. फास्फेटेज रिमूव करता है फास्फेट ग्रुप को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ऐड करता है फास्फेट ग्रुप को. यानी ये ऐड किसमें करेगा? ये हमारे जो डिजायर जीन है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जो पॉलीमरेज या पीसीआर के बाद जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है, उसमें हमने क्या करना, क्या ऐड करना है? फास्फेट ऐड करना है. तो ये फास्फेट ऐड कौन करेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज. 5 प्राइम फास्फोराइलेशन ऑफ डीएनए आरएनए फॉर सब्सिक्वेंट लाइगेशन. क्या करेगा? 5 प्राइम फास्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ द फास्फेट ग्रुप एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए आरएनए फॉर द लाइगेशन. रिमूवल ऑफ 3 प्राइम फास्फोराइल ग्रुप phosphatase activity. It has also a phosphatase activity but remove the phosphate group from the 3 prime end. So it has the dual function. Polynucleotide kinase has dual function. Add the phosphate group at the 5 prime end and remove the phosphate group at the 3 prime end. Phosphatase activity भी है इसकी. End labeling DNA and RNA for probes and DNA sequencing इसको हम labeling के लिए इस्तेमाल करते हैं for probes and synthesis क्योंकि इसकी double activity है. ATP इस्तेमाल होगा 5 prime डिफास्फो डीएनए. हमने क्या किया? हमने एडीपी और 5 फास्फो डीएनए इसको हमने ऐड कर दिया, इसके साथ दोनों को फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया, अटैच कर दिया. एटीपी ने फास्फेट ग्रुप इसको में ट्रांसफर कर दिया. इसकी एग्जांपल ये 5 प्राइम पे कोई फास्फेट मौजूद नहीं है, 5 प्राइम में कोई फास्फेट मौजूद नहीं है. T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ने एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ और जो फास्फेट हैं, 2 एटीपी इस्तेमाल होंगे, फास्फेट अटैच हो गया यहाँ पे, फास्फेट अटैच हो गया यहाँ पे. इन समरी वी कैन से polynucleotide phosphatase or polynucleotide kinase is mainly used for the transfer of the phosphate group from ATP to the 5 prime end of our desired gene or our foreign gene. Terminal transferase, this it is also called the terminal deoxynucleotidyl transferase. This enzymes repeatedly add nucleotides to any available 3 terminus. ये nucleotide attach करता है. Although it works best on the protruding 3 end condition can be adjusted. Although it works best on protruding ends. Protruding ends होते हैं जो overhang ends होते हैं. These are called the protruded ends or protruding ends. Conditions can be adjusted so that blunt ends or 3 recessed molecules can be utilized. Blunt ends भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर हम conditions को
अपडेट करें. The enzyme is mainly used to add homopolymer tails to DNA molecules prior to construction of the recombinant. When we add the homopolymer, this is called the terminal transferase. DNA ligase, this is the DNA joining molecule, joining DNA molecule. This is also called the molecular glue. DNA ligase is an important cellular enzyme. DNA ligase seals single strand nicks in DNA by repairing broken phosphodiester bond. In genetic engineering, it is used to seal discontinuities in the sugar phosphate chain that arise when recombinant DNA is made by joining DNA molecules from different sources. Different sources हमने DNA molecule को join किया तो उस joining के लिए हम DNA ligase इस्तेमाल करेंगे. It can therefore be thought as a molecular glue which is used to stick pieces of DNA together. The enzymes used most often in experiments in T4 DNA ligase. There are two types of the ligase: T4 DNA ligase and the E. coli DNA ligase. T4 और E. coli दोनों को कोफैक्टर की जरूरत होती है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. Which is purified from the E. coli cell infected with the bacteriophage T4. Although the enzyme is most efficient when sealing gaps in fragments that are held together by cohesive ends, it will also join blunt-ended DNA molecule together under appropriate conditions. Enzymes work best at 37 pH as 37 degrees centigrade temperature, but is often used at much lower temperature 4 to 15 degrees centigrade to prevent thermal denaturation of the short base pair regions that hold the cohesive ends of DNA molecules together. The role of DNA ligase, this is the missing phosphodiester bond. Phosphodiester bond missing है, it is called the nick. This nick is ligated, is filled by the ligase enzyme. So ligase क्या fill करते हैं? Nick को fill करते हैं. Missing bond synthesized by the DNA ligase. It's the nick 3 DNA strand 1 और DNA strand 2. इसमें जो phosphodiester bond है missing है. This phosphodiester bond is formed by DNA ligase. It use ATP or NAD. As we have discussed, there are two types of enzyme. या तो ये T4 DNA ligase या E. coli. T4 use the ATP while the E. coli use NAD as a cofactor. It fills the nick and it form the phosphodiester bond. So DNA ligase is used for the formation of the phosphodiester bond or the fill the missing phosphodiester bond or fill the nick within the DNA cell. Thank you so much. That's all about the enzymes we use in the genetic engineering. In summary, we can say that there are different types of enzymes. Restriction enzymes that we'll discuss in the next lecture, modifying enzymes and ligase. Modifying enzymes में हमने endonuclease को discuss किया, exonuclease को discuss किया, DNA modifying enzymes में हमने polymerase को discuss किए और उसके अलावा alkaline phosphatase, kinase, terminal transferase and ligase. These are different types of enzymes used in genetic engineering. That's all about the enzymes used in the genetic engineering. In next lecture we will discuss about the restriction endonucleases.